क्लास के लिए विषय मिला है The topic that I received for the class is मन वचन कर्म में फरिश्तापन का the अनुभव कैसे experience of angelic stage in thoughts, words, and deeds. हम सभी का अब लक्ष्य है Now, our aim ब्राह्मण is से फरिश्ता बन to transform from Brahmins into angels. पहला हमारे जीवन का परिवर्तन रहा The first transformation हम in our शूद्र life से was the ब्राह्मण बने transformation from Shudras to Brahmins. अब है And now, परिवर्तन का सेकंड स्टेप now it's the second step of transformation ब्राह्मण से फरिश्ता बन to become angels from Brahmins, बाप समान बनना to become like the Father, माना ही प्रथम कर्म योगी फरिश्ता बनना means firstly to become an angel और who कर्म is योगी an yogi in action. फरिश्ता जीवन में चलते हुए And while moving in this life of being a yogi in संपूर्ण action, कर्मातीत फरिश्ता बन जाना to attain the complete stage of a karmatit angel. क्योंकि बाबा सूक्ष्म वतन में संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्ति फरिश्ता Because Baba is now the complete angel वो in the स्थिति subtle पाने region. के लिए And to अभी achieve that हमें stage, कर्म like the योगी Father, फरिश्ता बनना we have to become an angel, a yogi in action. तो जैसे हमें स्पष्ट है Now we have the clarity कि योग कोई क्रिया नहीं है that yoga is not just any form of लेकिन ritual, योग एक जीवन पद्धति है but it is a lifestyle. जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की एक कला है It's an art to live the life in a very, very elevated way. इसलिए हम सबको लक्ष्य भी यही देते हैं Therefore, we give all the aim कि यहाँ 1-2 घंटे के योगी बनने की बात नहीं that there is not the aspect of just doing yoga here for 1 or 2 लेकिन hours, योगी जीवन बनाने की बात but here is the aspect of making a yogi life. टोटल जीवन पद्धति को बदलने की बात It's a total transformation of the lifestyle. न कि केवल जीवन में योग ऐड करने की बात It's not the aspect of just adding yoga in life. तो जैसे शूद्र से ब्राह्मण हम बने So, just as we transform from Shudras into Brahmins, योगी से योगी बने from the ones who were in materialistic living, तो we हमने became total yogis, change किया we definitely brought a total change. अपने आहार में We brought change in our food, in the way we deal with others, in moving about, संग in our company, पहनावा ड्रेस in our dressing, अपनी दिनचर्या in our daily routine, अपने चिंतन में in our way of thinking, चर्चा में in our way of discussion with others. और दिनचर्या में परिवर्तन किया So we did bring a total change in various aspects of our तब हम life. ब्राह्मण बने And then we became Brahmins, योगी बने we became yogis. इसी प्रकार
In the same way, अब जो हमें योगी से फरिश्ता बनना है, now we have to become angels from yogis, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, angels from Brahmins. तो हमें ये स्पष्ट रहे Then we should be clear about this aspect कि that फरिश्ता केवल कोई स्थिति नहीं है to be an angel is not just a state of mind जो मात्र योग में हमें प्रैक्टिस करनी which we can only practice at the time of meditation, लेकिन फरिश्ता जीवन पद्धति but है। the angelic stage is a lifestyle too. तो अब हमें ये सोचना होगा So now we will have to think कि योगी जीवन के अंदर, that in a yogi ब्राह्मण life, जीवन के अंदर in a Brahmin life, अभी भी कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन हमें करना which है aspects really require transformation जो हम नेचुरल फरिश्ता so बन that we सके। become natural angels, कर्म योगी फरिश्ता बन सके। we become angels as yogis in action. योगी जीवन हमारा ऑलरेडी पवित्र जीवन, Yogi life is already a pure life, श्रेष्ठ जीवन, an elevated life, लेकिन उसमें भी हमें क्या सूक्ष्मता लानी। but what is the subtlety that we have to achieve? तो जैसे योगी को हम कमल पुष्प पर दिखाते हैं We show a yogi always on a lotus flower, कि कमल कीचड़ से उगता है, that the lotus grows in muddy waters कीचड़ से अलिप्त है। but still detached from it. इस प्रकार योगी भी Similarly, विकारी दुनिया में रहते a हुए yogi, whilst living विकारों से in the vicious world, still can remain detached. अब योगी से फरिश्ता बनना है And now, when we have to become an angel from a yogi, तो हमें अब इस अलौकिक जीवन के अंदर in this alaukic life, न्यारा रहना है, now we have to be detached even in this alaukic life. We have to be free from the desires, शुद्र जीवन तो बिल्कुल पतित हल्की जीवन, the life of a Shudra was definitely an absolute जैसे impure ही life, सत्य a ज्ञान very low हुआ, life. But as soon as we got the true knowledge, हमें स्पष्ट डिफरेंस दिखाई दिया we came to know the difference absolutely, कि clearly, कितनी बॉडी कॉन्शियस that life was of so much body consciousness and a very vicious ये living. कितनी पवित्र योगी And जीवन this is है। such a pure yogi life. तो हम सहज परिवर्तन कर लेते, So we really can transform very easily. लेकिन अब है But now, कि जो अच्छी पवित्र योगी जीवन, now within this pure and a very अलौकिक good जीवन, life, उससे a Alaukic फरिश्ता life, बनना, we have to now become angels. तो कहाँ हमें डिटैचमेंट लाना? So, in which area have we to experience detachment? उसके लिए बाबा ने For this, Baba has said, हमें सूक्ष्मता बताई है has given us the subtle aspects, कि ब्राह्मण जीवन के अंदर भी that even in the Brahmin life, हम जो कुछ करते हैं, whatever we are doing, जो हमने अचीव किया है, whatever we have achieved सेवा के क्षेत्र में, in the field of service, इस अलौकिक परिवार के क्षेत्र in the में, field of this Alaukic Brahmin family, जो भी नाम मान शान whatever name, स्थान
fame, uh, the पद, position, प्रतिष्ठा जो हमने पाई place, है, uh, whatever we अब have हमें achieved, उसमें भी even within that, न्यारा रहना है, we have to be detached. डिटैच रहना है। सबसे पहला डिटैचमेंट The very first detachment देह से न्यारापन, is the detachment from the body. जिसकी रोज बाबा प्रैक्टिस कराते। Baba makes us practice this on a daily basis. आज की पूरी मुरली में Today's Murli, बार बार बाबा ने इस अभ्यास पर हमें बताया, Baba has made us practice so many times. और जैसे ही ये सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास परिपक्व हम बनाते हैं, And as much we make stronger the practice of soul हम consciousness, नेचुरल हर बात में डिटैच रह, we will naturally become detached from many, many aspects. फिर इस अलौकिक परिवार के अंदर भी Then, even in this Alaukik family, जिन ज्ञानियों के साथ, योगियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ हम रहते हैं, with those Brahmins or yogis or जिसके the साथ knowledgeable हम ones रोज with whom we stay, पढ़ते हैं, with whom we सेवा study करते every हैं, day, with whom we serve every हमें day, इस अलौकिक परिवार के संबंधों में भी in these Alaukik relationships, न्यारापन लाना है। we have to bring detachment. हमारा एक दो के साथ जो संबंध है, The relationship that we have with each other अलौकिक दिव्य हो should be Alaukik and spiritual, और उसमें divine. न्यारापन। In that, the essential ingredient is detachment. भारत में एक कहावत है There is a saying in कि India आसमान से गिरा that खजूर पर अटक गया। sometimes the state of a person is as if he just fell from the sky, हमारा but then ऐसा he नहीं got होना stuck up on चाहिए top of a palm tree कि लौकिक से, instead of reaching the ground. अज्ञानियों से, कलयुगी दुनिया की So it should बातों not से तो happen हम with us डिटैच that we हुए, got easily detached from the Kaliyugi aspects, लेकिन यहाँ from फिर the Iron आपस Aged में world, the old world. एक But then we दूसरे got अटैच stuck ना हो जाए, in this Lokik family and we got attached with one अनावश्यक another here, बातों में, or we got stuck in very एक दो useless के aspects. अंदर इन्वॉल्व ना हो We do जाए, not get involved in such useless aspects क्योंकि मन का ये नेचर है because it is a nature of the mind कि जिसके साथ रोज हम उठते हैं, बैठते with whom हैं, we जीते हैं, sit काम and करते हैं, work and eat and do धीरे different धीरे things. मन वहाँ अपना घर बनाने लगता है, The mind स्थान starts बनाने building a लगता home there. Mind starts giving a है। space to इसलिए that अब person. हमारा उठना, बैठना, जीना, काम करना Now our entire इस lifestyle ब्राह्मण परिवार के साथ है, is with the Brahmin family on a day-to-day हम basis. उसमें न्यारे और So प्यारे we हैं। have to pay attention on being loving but at the हम same एक time दो से be कॉमन detached. बन गए हैं, एक दो में इन्वॉल्व हो गए हैं, When there is उसकी निशानी ये है ordinariness, so कि we get एक involved दो with each की other. बात हमें The sign डिस्टर्ब is करेगी, that we get disturbed by each एक दो other's की कमी um, पेशी, some or गुण the other अवगुण, aspect. कमजोरी का हमें चिंतन चलने Then लगेगा, we start thinking upon the weaknesses of the एक other दो one. का व्यवहार, स्थिति, पुरुषार्थ, सेवा अगर नेगेटिवली हमें इम्प्रेस करता है, If we get negatively impressed by somebody's service, इसका अर्थ behavior, यही है then the meaning of it is कि हम अपने आप में फोकस्ड नहीं
नहीं We है, are not focused within ourselves. हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं We है, are not concentrating on our aim. हमारा अटेंशन एक दो के प्रति है। Our attention is on others. बाबा हमें कहता है ज्ञान का चिंतन, Baba says, churn the knowledge. ज्ञान का मंथन, There should be the लेकिन thoughts हम on knowledge. ज्ञानियों का चिंतन करने But we लगते start churning about the knowledgeful ones. कि फलाना ज्ञानी ऐसा है, ये ज्ञानी ऐसा That है। this one is like that and that one is like अगर that. इस प्रकार की हमारी मन की स्थिति है, If that is our state of mind, इसका अर्थ ये है the meaning is कि मैं अपने आप में फोकस्ड I am not focused within myself. जरूर मेरा एक दो के ऊपर ध्यान जा रहा है। Definitely, I am actually looking at someone else. इसलिए बाबा कहते हैं So Baba says, कि बार बार अपने आप को याद कराओ try to remind yourself again and again, कि मैं यहाँ किस लिए आई, why have I come here? मेरा लक्ष्य क्या है। What is my aim? तो रोज की दिनचर्या में In our daily routine, प्रैक्टिकल में न्यारापन होगा, when there will be detachment in तो practice, उड़ना सहज हो जाएगा। then it will be easy to fly अपने आप हम लाइट हो जाएंगे, because we will naturally become light बंधे नहीं। as we won't be tied anywhere. आत्मा भारी तब होती है The soul experiences heaviness when जब वो कहीं भी किसी से भी कोई भी बात में बंधी हुई है। when it feels tied up with a person or somewhere or something. अगर हमने ये पाठ रोज पक्का किया, If I make this lesson firm on a daily basis, जैसे बाबा हमें पाठ पक्का कराते हैं just स्वयं as के लिए, Baba makes this lesson of the soul very firm, तीन बात पक्की कर। we also should make three aspects firm within ourselves. जब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, And when we start our daily कारोबार शुरू timetable, करते हैं, when we start our तो हम activity, उसको याद कराएं। then we should remind ourselves of these three aspects. सबसे पहली बात है, The first aspect, बाबा कहते हैं Baba says, कि आप निमित्त that you are an instrument. अपने डूइंग पार्ट को अगर हम ठीक करना चाहते If we want to do, we want to make the aspect of doing detach करना accurate चाहते हैं, and also experience detachment, ये पक्का कर ले then we should make the first lesson firm बाबा मालिक है, that Baba is the master, I am the instrument. क्योंकि अब हम बाबा की तरफ से कारोबार कर रहे हैं। Because now we are actually working on behalf of की Baba. तरफ से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे We हैं, are administrating on बाबा behalf की of तरफ Baba. से हम मैनेजमेंट कर रहे We are हैं। managing on behalf of Baba. तो हम रोज, जैसे भारत में ये रिवाज है, Just as there is a custom in India, में जब भी दुकान in खोलेंगे, many people's lives, that ऑफिस when में they जाएंगे, open their shop daily or they go to the office, दुकान के स्टेप्स चढ़ते हैं, उसको भी नमन करते हैं। when they climb the steps of the shop, they actually bow, भगवान का they दिया salute, हुआ कमाई का साधन, because they feel that it is God given gift to earn income. हम भी सेवा की पोजीशन में जब अपने अपने डिपार्टमेंट में, सेंटर में So when we we are in the position of our service and we are going to our department on our seat, then we should remind ourselves एक क्षण कि बाबा only मालिक for a है, second that Baba is the master and I am the instrument. आज जो कुछ मुझे मान, शान, महिमा
प्रतिष्ठा जो मुझे मिल रही है whatever name, वो बाबा fame, की कृपा praise, से etc., which I am receiving is only because करता of Baba. करने कराने वाला The बाबा। doer is Baba. हमारा काम है योग्य इंस्ट्रूमेंट बनना। Our task is to be the worthy instrument. बाबा का काम है हमारा उपयोग करना। Baba's task is to use us. तो आप कितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे So, even whatever amount of responsibility you तो have, सेवा के क्षेत्र में अलौकिक जीवन में कितनी in भी the field of ऊंची service, in the पोजीशन हमें Alaukik मिलेगी, life, how much ever position you may लेकिन receive, मालिकपन नहीं आएगा। but you will not experience the ownership. हमें पक्का रहेगा It will कि be so बाबा strong and कराते firm within us that it's Baba नहीं। who is doing, I am the instrument. दूसरी बात, The second aspect, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं day by day we are seeing कि परिवार भी बढ़ता जा रहा है, that the सेवा भी family बढ़ती is जा रही है, expanding and the service is सेवा expanding के स्थान और साधन भी बढ़ते जा and रहे the हैं places of service are increasing, और the जरूर बढ़ने facilities ही are हैं increasing, क्योंकि and बाबा का definitely ये they are going to increase because it is God's task, it is Baba's task. लेकिन और हम But, बाबा के बने हैं and we have become बाबा की Baba's मदद करने के लिए, to बाबा का help Baba, उपयोगी बनने के लिए। to become useful to Baba. हम सिर्फ बाबा से पालना लेकर केवल अपनी जीवन अच्छी बनाना नहीं We do चाहते। not want to really make an elevated life for ourselves alone हमारा by taking the कर्तव्य है sustenance from Baba, but it is our अपने duty, जीवन को अच्छा बनाते हुए while making our own हमें life विश्व की elevated, सेवा we करनी have है। to serve the whole world. पूरी शक्ति से बाबा का कार्य दिल से, जिम्मेवारी से, We have to do with full effort, जिगरी full भाव energy, से करना है। with full लेकिन heart. We have to take up हमें the full ये पक्का रहे responsibility to serve the world. कि मुझे सेवा करते हुए But we should have it firm within सेवा में ourselves. While doing उलझना नहीं, service, I don't want to get trapped in service. लेकिन But मुझे बेहद की अथक सेवा करते I want to हुए do the tireless, unlimited सेवा service. से भी पार जाना है। And then I want to go beyond that too. मुझे अच्छा सोशल वर्कर बनते हुए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर Whilst बनते being a हुए, very good social worker, अच्छा a good मैनेजर बनते हुए administrator, a बाबा good के इस manager यज्ञ के अंदर in मुझे Baba's Yagya, अच्छा योगी I भी want to बनना be है। a very good yogi too. क्योंकि अल्टीमेट बाबा से मुझे मगन होना है, Because ultimately सेवा में मुझे I want to be lost in the love of Baba. ये नहीं सिर्फ सेवा में मैं उलझी रहूं, It's not that I just want to be so busy in service, जिसको बाबा कहते हैं for कि which Baba says एक्शन कॉन्शियस, that we सर्विस become कॉन्शियस anxious, नहीं बन action जाए। conscious, or service conscious. हाँ, दिल से सेवा करें, बहुत सेवा करें, Yeah, let's do a lot of लेकिन service and with बाबा heart, से प्यार भी जिगरी करें, but let's उसमें have so भी much हम deep मगन love हो for सके। Baba that ultimately we experience that lost stage, और lost in तीसरी love बात, of Baba. बाबा ने हमें फाइनल प्रोग्राम दिया है And Baba has also given us the final program कि अब हमें वापस घर जाना है। that we have to return back home. सिर्फ यहाँ हमें इस जीवन के अंदर भी
बैठे नहीं रहना है, We don't have to just sit अल्टीमेट back हमें here in वापस this घर life. जाना है। Ultimately, we have to return back home. ये हमें पक्का याद रहे। This should be remembered very firmly. अगर रोज हम प्रैक्टिकल कारोबार में, If every day आपसी इंटरेक्शन में in our activity, in our बार dealings बार with each अपने other, आप को ये पाठ पक्का कराते if we हैं, make this lesson firm, तो हमें ये चीजें पकड़ेगी नहीं। then all these other things will not be able to हम catch us. We won't नाएंगे, get caught up. We will remain detached. हमें अंदर से ये लक्ष्य पक्का रहे From within, this aim should be clear कि मैं बाबा की बनी हूँ, that I have become Baba's अपनी अलौकिक ऊंचाइयां प्राप्त करने की, to attain the heights of my spirituality. न कि सिर्फ इस सेवा के कारोबार में Not only in terms of doing नाम मान service शान प्राप्त to करने की। achieve name, fame, and popularity. तो हमें इच्छाएं नहीं हो, इच्छाएं Then there won't be desires. हमें मनुष्य बना देती है योगी से, Desires again change us from a yogi to इच्छाएं an हमें ordinary भटक man. देती। It's the desires which make us wander. हमें पता है हम योग्य बनेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, We know that we'll be worthy and will be able to perform स्वतः elevate हमें tasks. स्थान मान मिलना Then ही है। automatically we will get the name, fame, हमें the position, उसके etc. पीछे We भागने do की not have to आवश्यकता run after नहीं all है। that. एक मानसिक संतुष्टि हमें रहे There has to be a mental satisfaction. कि जीवन में जो आवश्यक है Whatever is essential in बाबा my ने life, दिया ही है Baba has given me और already देगा। and He will give me. अगर कुछ मुझे नहीं मिल If रहा है suppose I am not getting something, तो जरूर उसकी आवश्यकता then नहीं है, definitely, actually, I don't इसलिए require नहीं। it right now, and therefore I'm not getting it. तो ये निमित्त भाव, So, this aspect of being an instrument ये न्यारेपन का अभ्यास and the practice of detachment और वापस घर जाने and की to return स्मृति back home, this consciousness, जीवन में हम अपनाएंगे, if we adopt तो this in हम our हर life, बात में हर व्यक्ति से then in every aspect, सब from every करते हुए individual, भी while doing everything, डिटैच रहे। we will remain detached, separate. और डिटैच होते ही हम अपने आप लाइट रहे। And then, as soon as we experience detachment, there is an experience of lightness केवल automatically. सोचने की बात नहीं है, It's not just an aspect of thinking मैं लाइट हूँ, that I am light. लेकिन ऑटोमेटिक हम लाइट रहे Automatically, there is that stage of being light. और स्वतः मन And ऊपर automatically, जाएगा, the mind बाबा goes की ओर beyond जाएगा। and it goes nearer and closer to Baba. हम ये अनुभव करेंगे We will experience कि मन की आंख के सामने the eye of the mind बाबा सदैव रहेगा। will always see Baba in front. भल मैं शरीर से यहाँ हूँ, Though I am in the body here, लेकिन मन बुद्धि से but through my mind and intellect, मैं अपने वतन में I am in my home, बाबा के पास। very close to Baba. अगर रोज के प्रैक्टिकल
ब्राह्मण जीवन में सेवाकीय जीवन में In this everyday Brahmin अगर ये life or a पाठ life हमें of पक्का service, नहीं है if these lessons are not firm, तो सिर्फ योग के समय प्रैक्टिस करने से फरिश्ता नहीं बन then सकेगा just by practicing at the time of meditation, we cannot achieve the stage of being an क्योंकि angel. प्रैक्टिकल अटैच हो रहे हैं और योग में Because in उड़ना practical चाहते हैं तो activity, we कैसे are बन still सकते getting very much attached. How can we fly? हमें ये चेंज करना है We have to bring this change. इसलिए पिछले 5 वर्षों से And so, from the past 5 years, 5-7 वर्षों से from आप 5 to 7 सीजन years, में in देखेंगे every season you will see कि बाबा हमें ये पाठ पक्का that करते Baba is making this lesson very firm. बाबा कहते हैं कि अब दुनियावी रूप का Baba says अभिमान that the worldly अटैचमेंट form of नहीं ego आता है or लेकिन attachment may not come, इस अलौकिक जीवन में हमने but जो कुछ भी there are these प्राप्त किया subtle aspects of attachment and ego of the या achievements in अभिमान this अपने alaukic अच्छे life. योग का अभिमान अपनी Maybe सेवा it's का the ego अभिमान of good knowledge or अपनी yoga प्लानिंग of good बुद्धि का yoga or अभिमान of good अपनी service विशेषताओं or का अभिमान ego of good planning or of any of your specialities. ये सब चीजें मन को भारी करती And all these aspects make your mind very heavy. इसलिए And so, ब्रह्मा बाबा के लिए जैसे हम गायन करते हैं and so the praise that is sung for Brahma कि Baba, अपने आप सभी कुछ करके he did everything अपने himself, आप but छिपाए at the same time, he always remained very, very incognito. सब कुछ करके कुछ भी ना करो तो भी फरिश्ता नहीं बन सकेगा सब कुछ करके भी कॉन्शियस रहेंगे तो भी फरिश्ता नहीं बन सकेगा करना हमारा कर्तव्य है It's our duty to do, करते हुए अभिमान में ना आना मैंपन में while ना doing आना not to get the ego of it. ये चीज फरिश्ता बने This makes us an angel. इसलिए जैसे 5th स्टैंडर्ड में Just as in the पास 5th होने standard, वाला 6th में जाए the one who passes will then come to the 6th वैसे standard. योगी जीवन में सफल होने वाला The one who is successful in yogi life फरिश्ता will जीवन में जाए become an angel. अगर ब्राह्मण जीवन मेरा सक्सेसफुल नहीं If है my Brahmin ठीक life is नहीं not है successful, it's not up to the mark, इस साकार वतन के इस ब्राह्मण जीवन में मेरी कोई गड़बड़ है in this physical world there are ups and downs in my सूक्ष्म Brahmin वतन का my Brahmin life, सूक्ष्म फरिश्ता हम कैसे बन then सकते how can we become a subtle angel? इसलिए कर्मेंद्रियों से And so through the और senses वाचा से and through words, जो भी मेरे कर्म हो रहे हैं whatever actions are being performed, उसमें मैं ठीक हूँ I have to be okay. विकर्मा जीत हूँ I am the victorious तो one over my कर्मातीत sins. की ओर आगे बढ़ सकते Then I can proceed towards the stage of being karmatit. और बहुत सहज विधि बाबा ने हमें बताई And Baba है has told us a very, very easy method कि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो कर्मेंद्रिय से that कोई you have to भूल have ना control over your senses. There should be no इतनी mistake committed दृढ़ता by your senses. There should be so much of इतना determination. willpower, There should be so much of willpower. इतना संयम हमारे There अंदर should हो be so much of control within कि ourselves, मुझे कर्मेंद्रिय से श्रीमत के विरुद्ध कोई काम नहीं so करना that I don't perform any action through my senses against Srimad. और श्रीमत तो हम सबको स्वीकार
स्वीकार्य है। And of course, we've accepted Baba's Srimad. भाई मेरी मत तेरी मत न पसंद है आपस And में, maybe I don't agree with you or you don't agree पर with me, श्रीमत के अनुकूल but जो भी मत है, whatever direction is according to Srimad, मेरी या आपकी, वो हम it may be सबको yours or it may be स्वीकार। mine, then it's accepted by all. और मैं समझती हूँ कि अब हमारा मुरली का स्टडी, And I understand that our study of the ज्ञान Murli, का स्टडी the study इतना of the गहरा knowledge, है is so deep जो हम परख सकते that we हैं can discriminate कि इसका कहना, उसका कहना, मेरा that whether कहना someone says or whether I am श्रीमत saying के अनुकूल is है या नहीं। according to the Srimad or not. और श्रीमत के अनुकूल जो बात है, And whatever is according to the वो Srimad, चाहे कोई छोटा व्यक्ति भी कहे, whether a very junior person is saying, मुझे उसको स्वीकार, I have to accept it क्योंकि मेरा लक्ष्य वही। because the aim is the same. और दूसरा है कि वाणी से जो व्यवहार हम करते हैं, And whatever dealings we do through our words, because even speaking is actually action. तो जो आत्मा बाबा से गहरी प्राप्ति करते, Then whichever soul who is attaining very deep attainments, alaukik attainments from Baba, जो सूक्ष्म अनुभूतियों से भरपूर है, who are fulfilled with very subtle experiences from Baba, संयम, कंट्रोल जरूर आ जाता। then they will definitely have control over their words, their speech. इसलिए वो वाणी से भी जमा का खाता ही बनाए। They will definitely accumulate in their account through their आप words. सबका अनुभव होगा It must have been your experience too. कि जब हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करके उठते हैं, When we get up after a very good meditation, योग में गहरे अनुभव प्राप्त करते we हैं, have got deep experience in that. एक घंटे के योग के बाद After that 1 hour of meditation, 2-4 घंटे तक for 2 or 3 hours, आपको ज्यादा बोलना, you will not feel like talking for a long time, or you wouldn't like to talk some useless Naturally, things. आप आवश्यक बोलेंगे, Naturally, you will just talk what is essential. You will talk sweetly and you will talk very peacefully. कल्याणकारी। You will talk what is only beneficial. तो जो आत्मा अलौकिक प्राप्तियों से भरपूर है, So, those souls who are fulfilled with the alaukik उसका attainments, वाणी पर संयम, they will have a good control over their वाणी speech. में अलौकिकता, There'll be spirituality in speech automatically. इसलिए So, वाणी व्यवहार speech and द्वारा behavior जो or हम dealings, हिसाब बनाते हैं, the श्रेष्ठ बनेगा। the account that we make through that will also be elevated and will be accumulated. और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, अपने बीइंग पार्ट को ठीक करने के, Secondly, Baba also tells to take care of the aspect of the being. One is the doing and now is the being. क्या चेंज लाना है, Practically, जीवन what change have you to पद्धति bring? में स्वयं में निर्माणता बाबा, Baba says the aspect of humility. कितने भी महारथी बन जाए, How much ever you become a Maharathi soul, कितने भी हम सर्विसेबल बन जाए, how much ever we become serviceable, कितने भी सेंटर के हम मुख्य अनन्य बन जाए, how much ever we become the main instruments of the center,
but we should not get the ego of it. इसलिए बाबा ने लास्ट जो 3 शब्द कहे थे, So the last three words that Baba said, निराकारी, Sakar Baba, निर्विकारी, that you have to be bodiless, you have to be viceless, and the last word was you have to become egoless. जहाँ हमें अपने किए करे का सूक्ष्म भी अभिमान आता है, Wherever we get even a very subtle form of ego of whatever वहाँ we have हमारा done, प्रोग्रेस रुक जाता our progress will stop there. है। अभिमान आने से गुण अवगुण बनने लगता है। When you get the ego, the virtue starts changing into a defect or a weakness. प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने जो किया, Practically, माँ what ने Brahma जो Baba किया, did, whatever Mama did, दादियों ने जो किया, and whatever Dadis have done, उसकी तुलना में in हम जो comparison to कुछ that, करते हैं whatever we are तो doing कुछ भी नहीं। is nothing. इसलिए अपनी कंपैरिजन, So, अपना तुलनात्मक अभ्यास, स्वयं का निरीक्षण so it's so बाबा important के that we कनेक्शन से observe ourselves in connection with Baba. आपस में करेंगे, If अपने we do अपने it just सेंटर in के घर में comparison to करेंगे, one another, तो हम सोचेंगे then we will कि think, मैं ही बहुत कुछ कर रहा oh, हूँ, I am doing quite a मेरे lot. शहर में, मेरे सेंटर में, In my मेरी city, गली in my में मैं center, ही in दिन my रात country, I'm quite मर रहा active हूँ, day कर and रहा night. हूँ, मेहनत I कर am रहा हूँ। literally dying in service. लेकिन मधुबन में आकर But after coming to इस Madhuban, बेहद परिवार को जब हम when देखते you हैं, see this unlimited family, तो हमें पता चलता है then we come to know, कि मैं एक नहीं हूँ, but I'm not the only लाखों one. हैं जो There बाबा are पर so many millions कुर्बान हैं। who have surrendered themselves on Baba. तो हमें अभिमान नहीं आएगा, And हमारे so में when we see नम्रता that there are रहेगी, many, then there will not be the ego. निर्माण भाव रहेगा। Then there will be humility. प्रैक्टिकल मुझे उड़ना है, न्यारा Practically, I रहना have है, to fly, I have to be तो ये detached. आवश्यक है Then this is very कि essential प्रैक्टिकल कारोबार में ये चीज हमारे में, that this has to come in our dealings, day to day dealings. इसलिए बाबा हमें हर सीजन में So, ये Baba कुछ tells बातें us in every season बार बार अंडरलाइन कराते these हैं। aspects again and again. And he underlines these aspects too. फरिश्ते को धरती से ऊपर दिखाते, The angel is always shown being beyond the earth, उड़ता हुआ, always flying. तो फरिश्ते जीवन पद्धति का आधार है। So, the lifestyle of an angel is इस based on अलौकिक जीवन, अलौकिक सेवा, अलौकिक परिवार में न्यारापन, detachment in this alokik life, alokik service, and within the alokik family. और So, the underlying अंदर में point ये is उमंग, detachment मुझे बनना ही, and the internal enthusiasm that I बाबा want to कहते हैं become. धुन लग जाए। It should be like आज भी बाबा a ने कहा ना, continuous करना लग जाए, beating within फिकर लग yourself. जाए, There should be a concern within मुझे बनना ही। that I want to become, I will become. जीवन के और लक्ष्य, जीवन की और इच्छाएं The other aims in life or the other तो desires दूसरे जन्म में भी पूरा कर that we सकेंगे, can do in the other births of the cycle too. लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो
मुझे But ऊंचा होना है, the spiritual elevation वो तो केवल is अभी possible only इसी at जीवन में this ही हो time in सकता this है। life. और व्यक्तिगत मुझे रियलाइज हो And individually, there कि has to be बाबा the मेरे realization पीछे मेहनत कर रहे that हैं, Baba is making so much effort behind me. बाबा मुझे बनाना चाहते Baba हैं, wants me to become. तो मुझे भी बनना ही So then है। I have to become. मेरे अनुभव से Through my जो experience, बाबा कहते हैं whatever Baba says, वो हम दिल से स्वीकार करते when we हैं, accept it with our heart, तो बनने में, पुरुषार्थ करने में then मेहनत नहीं। there is no labor in becoming that or to make efforts. हमें मुश्किल वहाँ लगता We है, feel that labor or the difficulty युद्ध वहाँ चलती or है, the मेहनत war, वहाँ लगती है, struggle, जहाँ मेरी सूक्ष्म इच्छाएं where और my मेरे very इंटरेस्ट subtle desires दूसरे or हैं। interest are other than the aim that Baba has given. मुझे अपने आप को पक्का कराना है, I have to make this firm to myself. भल मेरे पूर्व संस्कार कोई भी हो, Whatever is my वो कुछ previous भी मन से sanskaras, तूफान जगाते हो, and they will definitely create storms. लेकिन मेरा But अपना बुद्धि का डिसीजन but my क्लियर और decision of दृढ़ my own हो, intellect has to be very clear and determined जो बाबा कहते that हैं, whatever Baba is जो saying, बाबा कराते हैं, whatever जो Baba बाबा wants me to हमसे do, चाहते हैं, whatever Baba wants वो from me, ही सत्य है, that is the only truth. वो ही श्रेष्ठ है, That is the only elevated वो thing. ही कल्याणकारी That है। is the only beneficial thing. इसलिए मुझे And रुचि ना so, हो, इंटरेस्ट even if ना I हो, don't have तो भी interest, मुझे डेवलप I करना have to है, develop क्योंकि interest इसी में मेरा कल्याण। because there is benefit for me only in this. और इसलिए And so, मेरा काम है अंत my तक task is ज्ञान योग के पुरुषार्थ में लगे I रहना। have to be intense in the effort of knowledge and yoga up till the end. विश्वास है We have the faith कि मैं अगर that जिगरी दिल से if I पुरुषार्थ am making करती effort रहूंगी, with a lot of तो love from the जरूर heart, मैं बन ही then जाऊंगी। definitely I will become. क्योंकि जो अपनी पूरी शक्ति से Because those who are applying all दिल their से energy, all the powers, पूरी एकाग्रता with से full लगे हैं, concentration, with a lot of love from their तो heart, बाबा जरूर then मददगार Baba होंगे। definitely helps them. बाबा हमें बना ही देंगे। Baba will definitely make us. इसलिए बार बार रोज मुझे अपने आप को Again and फिर again, every day, अपने लक्ष्य I की have to एकाग्र करते रहना make myself concentrate or focus on my aim again and again. और उसके लिए बाबा ने कहा है For that, Baba has said कि दो चीज लास्ट स्टेज में बहुत आवश्यक है, there will be two aspects for the last stage: क्लियर इंटेलेक्ट। clean mind and the clear intellect. क्लीन माइंड मुझे व्यर्थ से मुक्त करे, A clean mind will help me to be free from the waste. मन अशुद्ध बनता है, मन भारी बनता The है mind becomes impure and heavy व्यर्थ से। because of the waste. वहाँ ये न्यारापन
अपनापन काम में आएगा कि आप And that is न्यारे where होके अपने आप detachment की is very, अर्पणा very हो useful. जाएगी, It's then the waste becomes very less. देखते हुए, सुनते हुए, While जानते हुए seeing, भी while listening, while वो knowing, बातें मन को those डिस्टर्ब नहीं aspects will करेगी not क्योंकि मेरा disturb the mind उससे कोई मतलब है because I do नहीं। not have any connection with those मेरा aspects. मतलब बाबा से My है, connection is only with बाबा के Baba कार्य से and है, with Baba's बाबा के task पुरुषार्थ and से with my own efforts. अपने आप मन साफ रहेगा, Then स्वच्छ automatically the मन। mind will remain clean. और क्लियर इंटेलेक्ट मीन्स एक बाप दूसरा रब। Clear intellect means it's one Father and none other. मुझे इधर उधर किसी के और झांकने की जरूरत I नहीं, do not have to see here and there, एक बाप दूसरा रब। just one Father and none other. हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, In हर every आवश्यकता situation, in में, every problem, हर in अचीवमेंट में every मुझे बाबा achievement, पहले याद रखना I है। have to remember Baba first. Baba should be remembered first. ये नहीं कि मैं पहले चारों ओर घूम लूं मन Where से it should not सोच लूं, happen कहीं that से I कोई should गम wander इवे in तो all मैं four बाबा की directions तरफ चलती first, or नहीं। I should worry and think about it first, and then I remember Baba at the end. लाइन क्लियर मीन्स मुझे हर बात में पहले When line is बाबा याद clear, then in every aspect, first I will remember Baba. इसलिए बाबा ने अभी मुरली में भी बताया था ना And so Baba has recently said to us in the Murli कि मेरा संसार बाप दादा। that my world is Bap Dada. जब मेरा संसार मेरा सर्वस्व बाबा है When my everything is Baba, तो ऑटोमेटिक मैं सबसे न्यारी हूँ ना, then I'm automatically detached from everything else. नेचुरली मैं लाइट हूँ। Naturally, I am light. संसार में दो चीज हैं, There are two aspects in the world, एक रिलेशन है, one relationship, व्यक्ति है और पदार्थ है। that is people संसार किससे and बना? material things. व्यक्तियों से और पदार्थों से। It's people and the material objects. व्यक्तियों से संबंध है, It's relation with the people. पदार्थ धन साधन प्राप्त करना चाहते हैं Material objects, तो wealth, and मेरे सर्व facilities are to be संबंध attained. बाबा से है, So, when my all relationship मेरी is with सर्व Baba, प्राप्ति बाबा all से। my attainments are from Baba. और जब भगवान से सर्व संबंध है And when all relationships are with Baba, और God, उन संबंधों का सुख और प्राप्ति में कर रही हूँ and when I'm experiencing that तो happiness of that ऑटोमेटिक attainment, सब आत्माओं से मेरे संबंध then automatically I'm related with all the souls, and this relationship are very pure and very beneficial and of pure love. बेहद के हो जाए। They'll be unlimited. बाबा से सर्व संबंध इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबसे रुखे हो जाएंगे। It's not that we become dry or we cut our relationship with others if Baba is our world. मेरे सबके साथ संबंध निष्काम Then we will have निस्वार्थ भाव के selfless relationships with all. हानि स्नेह से भरे It हुए will be full of pure spiritual love, very divine relationships. और मेरे संस्कार बाबा ने कहा मेरा संसार बाप दादा। My मेरे world is Bap संस्कार Dada, and my sanskars सो are, फरिश्ता uh, सो देवता। are from Brahmin to एक angel to मन से deity. मनसा ये अभ्यास चले So this should be a mental practice, क्योंकि फरिश्ता मीन्स
लाइट स्वरूप, because angel means the form of सूक्ष्म light, तनवासी, the resident of the subtle region. तो मुझे अपना लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप याद रहे, Then I have to remember my point of मुझे light form. ज्योति बिंदु बाबा याद रहे, And then I will remember the point of मुझे light, अपना Baba. असली घर ज्योतिर्देश Then I have to ब्रह्मा remember याद रहे, the supreme abode, which is also an abode of light. मुझे स्वयं का फरिश्ता स्वरूप याद रहे, Then my own angelic form, which is also the form of सूक्ष्म light. वतन फरिश्तों की दुनिया याद रहे, Then I remember the subtle region, the residence of the angels. संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ता बाबा ब्रह्मा बाबा याद रहे, And then the complete angel, तो मेरी Brahma Baba. सारी Then जाने के स्थान ये the mind travels only to these aspects. I mean, to these places and to these forms. फरिश्ता स्वरूप Then the mind is settled more beyond only in the subtle region and the supreme abode. जाने के स्थान मुझे मन से इस एरिया में घूमना, I have to just be flying in these areas through my mind. सा ये अभ्यास कर्म में निमित्त और न्यारापन, So the practice in action is to be an instrument and to be humble, and then they in turn give us a practical experience बेहद की सेवा में बेहद के that in this परिवार में unlimited service, in this unlimited family, वैरायटी आत्माओं के in बीच this ही unlimited variety souls, in midst of all of this, न्यारे I am detached and loving and light and divine, and we can stay divine. ये अंदर से रोज पक्का कर ले, This has to be made firm internally every day that I have to become, I have to become. अब इस लगन की आवश्यकता, Now, this intensity is required. बाबा कहते हैं ना बाहरी कोई नया 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 खोजने की स्थूल रूप से बात नहीं है, And now, it's not the aspect of really searching for something outside, something new. No, it's actually this inner search. करने से पहले बाबा ने कहा है अपने में संपन्नता को You have to actually fulfill yourself from within to reveal the Father. और अब सब कुछ करते हुए ही करने का समय, And now the time is, while doing everything, you need to do the right thing. You have to do the service as well as you have to make your effort. Both have to move together. तो हम सभी बाबा की याद में बैठ So now we will sit in remembrance in that same intensity, with that same focus, and we will practice. Om Shanti.